Once again, you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here, your mentor for JEE Main and JEE Advanced Examination. And in today's video, we are going to continue with trigonometry. We had started the trigonometry in the previous lecture, and in today's video as well, we are going to continue with the trigonometry portion. Just a minute. Yes. So we are going to continue with the trigonometry portion. And this is trigonometry lecture 2. So in this video, we are basically going to do a bit about compound angles. We are going to start compound angles. In the previous video हमने क्या करा था guys? पिछले वीडियो में हमने यूनिट सर्कल के ऊपर डिस्कशन किया था. आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा. अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें. काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें बहुत आराम से समझ आ जाएंगी. फिलहाल हमें आज कंपाउंड एंगल स्टार्ट करना है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई थिंक वी शैल स्टार्ट. सो वी आर डिस्कसिंग कंपाउंड एंगल्स. तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल्स में बेसिक फॉर्मूले एंड बेसिकली फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? दीज फॉर्मूलाज आर एक्चुअली डिराइव्ड, दे आर एक्चुअली फाउंड फ्रॉम वेरियस रिजल्ट्स that used to be, that were actually discussed at some time in the past. And जहाँ तक मुझे याद है टॉलमी वगैरह के टाइम पे जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था तो इन रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. एंड उसी के बाद हमारे पास साइन रूल, कोसाइन रूल आया. एंड उसके बाद वहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसे ऐसे फॉर्मूला डिराइव हुए. बट एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस सिंस इट इज समवॉट आउट ऑफ द पोर्शन. So I don't wish to take you there. I would simply recall the formula for you and we will derive the subsequent results. ठीक है, जो भी मतलब हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस करने हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, these formulas are actually very important and we will discuss these formulas really very well. I hope आप लोग फॉलो करेंगे. And the time we discuss our formulas, जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात करता हूँ, तो अगर हम जब फॉर्मूला डिस्कस करें, ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. अगर आप पैटर्न समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, और अगर आपको ये चीजें समझ आ गई, देन द फर्दर कमिंग चैप्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 12th क्लास की बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, that will be really a cup of tea because it involves a lot of trigonometry in integral calculus as well. So मतलब लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी करने चाहते हैं, आप इंटीग्रेशन को मास्टर कर लीजिए. एंड आई विल ऑल्सो ट्राई फॉर दैट कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लें ताकि आपको इंटीग्रेशन में भी दिक्कत ना हो. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन ऑफ ए, I would only write plus initially so that मतलब आप लोगों को confusion ना हो. So I am going to write sin of a plus b. So this is equal to sin a cos b plus cos a sin b. ठीक है, this is the first formula that you must remember and this is a very basic formula. बिल्कुल बहुत simple है. पहले का साइन दूसरे का cos प्लस दूसरे का साइन पहले का cos. सिंपल. ओके, नेक्स्ट. अगर हम इसी में a माइनस बी लिखना चाहें तो इसमें सिंपल है, पहले का साइन दूसरे का कॉस माइनस दूसरे का साइन पहले का कॉस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं. साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. एंड what does this actually mean? This actually means is जहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी वो प्लस माइनस आए. ओके, so this was about sin formula, sin of a plus b and sin of a minus b. Another set of formula that is cos of a plus b, and in the upcoming line I'll also write cos of a minus b. So okay, so we are going to discuss cos of a plus b and cos of a minus b. So cos of a plus b is simple. देखो, पहले का cos दूसरे का cos माइनस पहले का साइन दूसरे का साइन. ठीक है, cos में हमारे पास पहले का cos दूसरे का cos माइनस, यहाँ पर हमारे पास साइन इंटरचेंज होता है. तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर ये प्लस है, दिस इंटरचेंजेस टू माइनस. ठीक है,
तो इंस्टेड आई वाज टू रिमूव दिस सो दैट मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो कि माइनस, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, सिंपल। एंड इसको अगर हमें कलेक्टिवली लिखना है तो आई विल राइट द कलेक्टिव प्रूफ ऑन द नेक्स्ट पेज, so that would be cos of a प्लस माइनस b, यानी कि पॉजिटिव के साथ क्या आ रहा है cos, अच्छा हमारे पास क्या टर्म है cos a cos b, और दूसरी साइड हमारे पास टर्म है sin a sin b। ठीक है, बढ़िया। अच्छा cos a cos b, और हमारे पास पॉजिटिव है और cos में हमारे पास साइन इंटरचेंज होता है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर लिया, और यहाँ पर a माइनस बी के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव के लिए ये, तो यहाँ पर ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, तो एनीवन कैन remember this। ठीक है, I would recommend you must commit to memory, these formula are actually very very important, and if you are able to understand and remember these formulas, then trigonometry is going to be a cup of tea, as I mentioned earlier। okay, तो अगले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, tan of a प्लस माइनस बी। ओके, सो tan of a प्लस माइनस बी जो हमारा थर्ड फोर्थ ओके फिफ्थ होना था यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पर हमारे पास होना था फिफ्थ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ होना था, tan ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें सेम रहता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। और अच्छा हाँ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इस देखो, हमें पता है tan ऑफ a प्लस बी कहाँ से आया होगा, तो tan ऑफ a प्लस बी आया होगा साइन ऑफ a प्लस माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ a plus minus b, so we will derive from this, since I would love to keep more derivations rather than rote learning, as I mentioned earlier। ठीक है, तो ये cos है यहाँ पर sin b। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos of a plus minus b, ऊपर से लिख लेते हैं cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम विल डिवाइड ईच टर्म, है ना, विल डिवाइड, या वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b, एंड मैं इसके बाद यू कैन फाइंड द रिजल्ट। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी, tan ऑफ a प्लस माइनस b इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, cos a cos b से मल्टीप्लाई भी किया और cos a cos b से डिवाइड भी किया, तो मतलब हमारे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया। और हम इस वाले एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, तो ये आ गया साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर भी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर वाले के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो और हम इस वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो व्हाट विल बी राइटिंग, वी कैन राइट इट एज दिस, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b अपॉन cos ऑफ a cos ऑफ, ठीक है, सिंपल। एंड उसके बाद हमारे पास ये मैं इसे इतना लंबा नहीं खींचना चाहता था, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, तो आई विल जस्ट कीप इट सिंपल फॉर यू नाउ। तो दिस विल बिकम साइन ए, देखो cos, अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज आई नो दैट x बाय जेड प्लस y बाय जेड। ओके, सो x प्लस y बाय जेड कैन बी रिटन एज x बाय जेड प्लस y बाय जेड। ग्रेट, so we can do it this way। तो of course हम इसे ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, एंड आई एम नॉट डूइंग दो स्टेप्स, बट यू कैन डू इट एट योर एंड। तो हमारे पास
तो बेसिकली अगर आपको ये चीज याद है कि हमारा tan a प्लस माइनस बी क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस साइन का रिटेन हो रहा है और यहाँ पर माइनस प्लस कॉस का रिटेन हो रहा है, तो आपको साइंस में तो एटलीस्ट कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, और अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको एक्चुअली कंफ्यूजन किसी भी चीज का नहीं होने वाला. ओके, so this was about some basic compound angles. We'll discuss more. Before that, I would ask you to solve some question, solve an example. तो इसका practically use कहाँ है? Let's say I have to calculate sine 15 degree, and since from the basic trigonometry you know that sine 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 by root 2. cos 45 का वैल्यू भी आपको पता है, 1 by root 2. sin 30 का वैल्यू आपको पता है, 1 by 2. और cos 30 का वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2. तो आपको ये सब पता है. अब आपको साइन 15 निकालना है, तो आप 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं. तो 45 प्लस माइनस 30, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो अब आप इसको ऑफ कोर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री. तो सिंपल एज दैट, ये वाली चीज आ जाएगी 1 बाय रूट 2 टाइम्स कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 माइनस कॉस 45 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन 30 होता है 1 बाय 2. तो दिस विल कम आउट टू बी रूट 3 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, तो ये हमारे पास साइन के लिए आ जाता है. एंड इसी से हम अब आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो फाइंड अ रिजल्ट, यू कैन ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट रिजल्ट, यू कैन फाइंड द रिजल्ट फॉर कॉस 15 डिग्री. ठीक है, या आप ऐसा करिए cos 75 निकालिए. cos 75 निकालेंगे तो उसको कैसे करेंगे हम, cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड ट्राई टू सॉल्व इट, टेक इट एज एन एक्सरसाइज एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, तो मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री निकाल लिया, देन द थिंग्स आर एक्चुअली वेरी सिंपल फॉर यू. ठीक है, हमें क्या क्या मतलब निकालने आने चाहिए, ये निकालना आना चाहिए. उसके बाद मतलब विद दिस नॉलेज है ना, ठीक है, आपको और भी चीजें आएंगी आगे, बट विद दिस नॉलेज यू कैन एक्चुअली फाइंड दीज थिंग्स. एंड दिस इज एक्चुअली साइन 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री. ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दिस. एंड नेक्स्ट हमें क्या आना चाहिए, साइन 75 कॉस 75 और tan 75. जिस भी तरीके से निकाल सकते हो आप निकाल लो. ठीक है, इसमें मैं आपको ये वाला तरीका क्यों एनकरेज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जो कि एक्चुअली वेरी सिंपल है और आप लोगों ने बहुत बार करा होगा. अगर आपको साइन 15 पता है तो आपको cos 75 भी पता है, और वो एक्चुअली दोनों इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री. राइट, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 75. तो आपका जो पिछला रिजल्ट है, जो हमने ये वाला प्रूव किया है, रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, तो इस वाले का भी रिजल्ट यही आना चाहिए, रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2. ठीक है, तो हम देख लेते हैं, cos a cos b कर लेते हैं. तो cos 45 cos 30 माइनस साइन 35 साइन 30 साइन 45. ओके, great. So we have cos 45, that is 1 by square root of 2, and cos 30 is square root of 3 by 2, minus sin 30 is 1 by 2, and sin 45 is 1 by square root of 2. So this is again root 3 minus 1 by 2 root 2. And this actually can be proved by this. Okay, so this also proves that sin of 90 minus theta cos theta हो जाता है. Okay, great. So we have this result again, and हमें अब cos 15 निकालना है. cos 15 निकालना है तो आप या तो ये लगा लीजिए cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या आप ये निकाल लीजिए कि आप sin 75 निकाल लें. तो sin 75 आप निकाल सकते हैं, sin ऑफ 45 प्लस 30. टेक इट एज अ होमवर्क, टेक इट एज अ होमवर्क एंड ट्राई टू अप्लाई बोथ दीज. ठीक है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है. टेक इट एज एन एक्सरसाइज एंड ट्राई टू फाइंड if they are equal or not, because they will actually come to be equal. If they are not coming equal, आपने कुछ गलती की है, तो you have to re-verify that. Okay, so इसका आंसर आना चाहिए रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2.
और इसका भी sin 75 का भी सेम वैल्यू आएगा √3 + 1 बाय 2√2। और यहाँ पर हमारे पास tan का क्या वैल्यू आ रहा है, √3 - 1 बाय √3 + 1 tan 15, और tan 75 आ जाएगा cot 15। तो मतलब आप बेसिकली tan में डील करें, दैट वुड बी मच सिंपलर फॉर यू ऑल। तो दिस इज √3 + 1 बाय √3 - 1। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को रैशनलाइज करना आता है। नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके सिंपल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2 - √3, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2 + √3। एंड इसको याद रखने का एक तरीका है कि हमें पता है कि tan हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब हम tan के ग्राफ से भी देख सकते हैं। पर अच्छा चलो, जिसने नहीं पढ़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शंस नहीं पढ़ा होगा, तब तक ये वैसे नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं चलेंगे। बट आपको ये पता है कि tan की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से 90 के बीच में ऊपर को जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। तो जब हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो tan 15 हमारे पास क्या आ रहा है, 2 - √3, विच इज एक्चुअली लेस देन tan 45, क्योंकि tan 45 1 है, और 2 - √3 क्या हो जाएगा, 2 - 1.73। ठीक है, तो आप उसको दैट वुड बी, ऑफ कोर्स दैट वुड बी लेस देन 1। और यहाँ पर tan 75, दिस 2 + √3, तो दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। तो वी आर एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक। हमें ये अंदाजा लग गया कि वी आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग आर एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, तो ओके, सो विद दैट एंड आई थिंक वी शैल प्रोसीड। आप लोगों ने ये वाले निकाल लिए होंगे, काइंडली कीप अ नोट ऑफ दीज, बिकॉज समटाइम्स आपसे tan 15 tan 75 में पूछा जाता है। ठीक है, खास करके क्वाड्रेटिक में एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज है। मतलब अगर आप x² + 4x + 1 को सॉल्व करें तो उसके रूट्स tan 15 और tan 75 यानी कि tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री आएंगे। बेसिक क्वाड्रेटिक में भी आप ये वाली चीज समझ सकते हैं कि अगर आपको tan 15 का वैल्यू पता है और tan 75 जो आपने 10th क्लास में की है, यू अप्लाई सम ऑफ रूट्स, यू अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपके पास रिजल्ट आएगा x² - 4x + 1 = 0 has two roots and these two roots are tan 15 degree and tan 75 degree. ठीक है, although we are not going to discuss that, instead we are going to discuss something more in tangents, and that is this property. So yes, so I guess we can move ahead. So just a minute, let me, yeah, great. So okay, I'm referring to my notes as well so that I don't skip some stuff. So okay, so we have this thing tan A + tan B अगर हमें निकालना हो तो ये किस फॉर्मूला में हमने देखा है, tan A + tan B। तो हमने tan of A + B अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा tan A + tan B ओवर 1 - tan A tan B। ठीक है, तो tan A + tan B अगर मैं थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश करूं तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू tan of A + B टाइम्स ऑफ 1 - tan A tan B। ओके ग्रेट। तो इससे हम क्या चीज का रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखो अलग अलग तरीके से इंट्यूशन ले सकते हैं, बट लेट मी टेक इट इन अ सिंपलर मैनर। so this will become tan of A + B, and instead of this let me do it in this way। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी, because actually I'm not doing anything, this is just simple manipulation, and ये चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टफ है तो ये एक्चुअल में टफ नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम डूइंग आर एक्चुअली फॉर योर बेनिफिट, सो दैट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप अगर आप कोई भी असाइनमेंट खोलें या आप कोई भी क्वेश्चंस खोलें तो आप यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर स्टडिंग विद मी, सो यू आर एक्चुअली गुड स्टूडेंट्स, एंड आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू एक्सेल by practice, by problem solving rather than by simply cramming. So that is what I actually expect from the viewers, and अगर आप में से अभी भी कोई क्रैमिंग करता है, you must try to reduce that। ठीक है, you can't actually avoid cramming, I must say। anyways, meanwhile मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए, 1 - sin A sin B upon cos A cos B लिख लिया। ठीक है, this follows from this result,
and this follows from this result. ठीक है, so tan theta is sin theta upon cosine theta. So I use that, and what I arrive at is this thing. So this is actually equal to tan of a minus b, sorry, a plus b. Let me, okay, so I have the keyboard here, yeah. So tan of a plus b is equal, और यहाँ पर क्या है, cos है cos b minus sin है sin b, so you can write it as cos of a plus b and divided by, oh, what actually happened, I don't know, I thought there was some lag, upon cos a cos b. Okay, so we have cos a cos b. Great. So we have this expression, and in this expression we can write this tangent as sine upon cos. So I'm not writing a plus b because, or I will write them as fast as possible. These two get cancelled out, and finally I arrive at a result that this is equal to this. Okay, you actually don't need to remember, but you must understand कि ये कहाँ से आ रहा है result. ठीक है, so this is a result that you can remember, but I don't recommend remembering. You must remember the basic formula of tan of a plus b. Sorry, so you must remember the basic formula of tan of a plus b, and then you are able to just manipulate this out. See, this is not a tough task at all. With practice, this will be extremely simple, extremely easy for you. Okay, so I guess we can move ahead. Yeah, so what we can discuss right now. Okay, so we have another thing, similarly, try to prove that tan of a minus tan of b is equal to sine of a minus b upon cos a cos b. So okay, so try. Okay, this is left to you as an exercise, so simple as that, and I will write another results. Either I can prove one, or you can simply apply. Uh, this is just for information, you can practice these. Okay, so, or instead I'll take one, I'll take this cot example ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो. सो cot a प्लस cot b, देखो वैसे तो ये फॉर्मूला से नहीं आता है, बट फ्रॉम द बेसिक इंट्यूशन हम इसे ले सकते हैं cos a अपॉन sin a, और इसको ले लेते हैं हम cos b अपॉन sin b. आई डोंट विश टू बर्डन यू विद अनदर फार्मूला. अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है cot ऑफ a प्लस b का भी. तो मैं तो मतलब अगर आई वुड प्रेफर यूजिंग टेंजेंट इंस्टेड, बिकॉज मुझे फ्रेंकली बताऊं तो कॉट के लिए इतनी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको प्रूव करना है तो आप ए की जगह 90 माइनस बी डाल दो, मतलब यू कैन 90 माइनस थीटा, एंड यू कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन थीटा ए, एंड देन यू कैन सॉल्व. so that is all up to you, but I personally don't find it actually very important, so I am not discussing it right now. Although if time permits we can discuss that in the problem session. Okay, anyways, we are having cos a upon sin a plus cos b upon sin b, and I am simply taking LCM. ठीक है, मैं LCM ले लेता हूँ. So this will be cos a sin b plus sin of a cos of b. ठीक है, so we arrive at this conclusion, and since we arrive at this conclusion, हम cos a sin b plus sin a cos b को हम लिख सकते हैं sin of a plus b, and what is our denominator? Our denominator is sin a sin b. So we are able to prove this result. Okay, and what I expect my dearest students to do is to try this as well. So cot a minus cot b. See, मैंने प्लस वाले कर लिया, अब नेगेटिव वाले कर लेना. Okay, and do take care of this thing. This thing might trouble you, and that is what I want you to think about. Okay, so this is a try. Great. So I have these things, and yes, so we have this thing. So more or less we are actually done with this segment of compound angles, मतलब basic compound angles, and we are going to solve the problems. But before that, I would like to enrich you with another concept. So this concept is this tan of, what about these? What about I have so many angles?
ठीक है, मेरे पास यहाँ पर लेट्स से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लेट्स से मेरे पास बहुत सारे एंगल्स आ गए, लेट्स से n एंगल्स आ गए। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट actually limiting it. I would just simply keep it as it is. So what I can actually do, how will I approach? Okay, so my approach will be simple. There is a simple reduction to this because it has been found in tangent that tangent of θ1 plus θ2 is actually equal to tan θ1 plus tan θ2 over 1 minus tan θ1 tan θ2. Okay, and okay, so I'm using the results that actually arrived. I haven't discussed the 3 theta results, so I'm not going into details for that, but I would just write a result first. So this is tan of θ1 plus θ2 plus θ3. So this is equal to tan θ1 plus tan θ2 plus tan θ3 minus tan θ1 tan θ2 tan θ3 upon 1 minus tan θ1 tan θ2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर प्लस tan θ2 tan θ3. आई होप मेरा वीडियो बीच में नहीं आ रहा होगा. प्लस tan θ3 tan θ1. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट. तो इसी से हमने क्या जनरलाइजेशन निकाला, तो इसी से हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज s1 minus s3 plus s5. so we have some alternate positive negative signs divided by 1 minus s2 plus s4 and so on till the time being we have nth products available. ठीक है, sum of nth product available, एक टर्म बचेगी तब तक हम इसे कर सकते हैं. ठीक है, so this is an important result and this follows from this thing tan θ1 plus tan θ2. you can find what is s1. s1 is sum of all the angles taken one at a time. So this is tan of θ1 plus tan of θ2 and so on up to let's say tan theta, and now I'm trying to limit it. Okay, what is s2? I'm taking these angles twice at a time. तो आप लोगों ने वैसे 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा sum of roots taken one at a time, two at a time and so on. Anyways, tan θ1 tan θ2 plus tan θ2 tan θ3 plus tan θ3 tan θ4. So you can actually generalize this thing. Okay, and s3 क्या हो जाएगा when the number of terms are the number of tangents are taken twice at a time. So we can actually do this process, we can actually do this for nth process, and yes, we can find the sum of n angles in a very simple way. So this is a property of tangents. Okay, so this was a special property. So meanwhile we have also discussed tan θ1 plus tan θ2 and tan θ1 plus tan θ2 plus tan θ3. Your homework is that you can try for 4 angles and try to give me the expression for the same. Okay, so without wasting much time, I think we can continue. Okay, so in the next part, I think we can solve some problems before, because we are more or less completed with, so we can switch to problems. Let me check if I have something for you all. No. So I think we can generalize some results and solve some problems for the same. So question 1. So in this question, you have been given cos of alpha plus beta is equal to 4 by 5. This is a previous year JEE question. And sine of alpha minus beta is equal to 5 by 30. So find the value of, let me check the value, find the value of tan 2 alpha. So this is what you are supposed to calculate. This is, I think, JEE 1979, old JEE subjective paper. Okay, you have to try. You have around 1 minute to solve. You can try. Meanwhile, you have to find tan 2 alpha. Now you have to generate you have to generate 2 alpha in such a form that you can find alpha plus beta, because from this expression, also it has been mentioned that alpha and beta are acute, I guess. It was mentioned in the problem. I have to check the problem, but I guess it was mentioned.
Yeah, so it was mentioned that alpha and beta belong to 0 to pi by 4. So actually this is an important information and I'll let you know why this information is actually important. ठीक है, उसमें मतलब ऐसा भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, so this information actually becomes very much relevant. Okay, so please give it a try, or either you can pause the video and try. Meanwhile I'll continue with the solution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अल्फा और बीटा 0 से पाई बाय 4 तक ही हैं, तो इससे हमें क्या इंट्यूशन है, क्या हमें व्हाट इज द मैटर एक्चुअली, व्हाई इज दिस रिजल्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट. देखिए, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं हम, ठीक है. तो अगर आपको याद होगा कि अल्फा हमारे पास 0 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच में है, और जो बीटा है वो भी 0 से पाई बाय 4 के बीच में है. तो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करेंगे, सो देयर सम हैज टू बी एक्चुअली इन बिटवीन दिस अल्फा प्लस बीटा, ऊपर लिखा हुआ था वैसे, हैज टू बी बिटवीन 0 टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2. तो अल्फा प्लस बीटा एक्यूट है, मतलब ये वाली चीज कॉस ऑफ सम फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दिस इज एक्चुअली 4/5, ठीक है. सो दिस थिंग एक्चुअली बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये किसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाए, या फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि कॉस में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल हो सकता है. और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो हमारे पास अकॉर्डिंगली जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर फील. तो आपके पास बाकी एंगल्स चेंज हो जाएंगे, तो उससे tan टू अल्फा की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है. सो हियर वी एक्चुअली प्रूव्ड कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही होगा using the simple inequalities. This is my first inequality, this is my second inequality. I added the two simply because the signs were actually of the same dimension, same direction. Okay, so I can simply do that. I can add and I'm done. But okay, so let us understand where will be अल्फा माइनस बीटा, बिकॉज ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सीधा सॉल्व करने को बोल देंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये, अल्फा माइनस बीटा ये है. Nobody will check, and that is where JEE will actually test you. JEE will actually test you on the concepts that you have actually missed while you were preparing sorry for the examination, like a prestigious JEE advanced examination. What that examiner will try to do is try to find the weaker links of the concepts, and you will find the problem very easy in the examination. But at the end of the day, जब आप मतलब आंसर की चेक करेंगे या आपका रिजल्ट आएगा, you'll find that you scored less marks. And where did those marks go? The concept visualization that cost you the marks that time. So actually we have to avoid that, and that's why, that is my entire motive. Anyways, so we have alpha between 0 to pi by 4, and yes, we have beta between 0 to pi by 4. Now another thing, that if A is less than B, so I'm discussing about inequality right now. I'm discussing only about inequality. I'm not going into the problem, the trigonometry problem, because that is easy, that you can do. Trigonometry problem is actually very simple, but the JEE problem will not be based on trigonometry. It might be based on some other concept that is actually trigonometry, but a basic form of it, and that is where the students are misled. तो जैसे हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट हम जब नेगेटिव साइन करते हैं तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नहीं भाई, नंबर लाइन देख लो, 0 -1 -2 1 एंड 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 आगे आ रहा है, बढ़िया. अच्छा, -1 आगे आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर्स में मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है. सो नेगेटिव नंबर्स में यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग दैट -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब 8th भी मैं बड़ी कक्षा की बात कर रहा हूँ आपने इससे छठी कक्षा में पढ़ लिया होगा. तो अगर a इज लेस देन इक्वल टू b, देन -a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -b. मतलब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर मेरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. मतलब मेरी इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो
ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी. तो आई एम अप्लाइंग दैट थिंग. तो वी हैव 0 टू बीटा टू पाई बाय 4. तो अगर मैं इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं क्यों कर रहा हूँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई, you'll realize that in a minute. So this will be 0 less than equal to minus beta less than equal to minus pi by 4. ठीक है. तो अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और मैं एक सेकंड इक्वेशन भी, हाँ, और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है. तो अब मैं दोनों को ऐड कर सॉरी, मेरे पास ये थी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन. तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, पाई बाय 2 के बीच में, और अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में है. अब माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, नाउ दिस इज वेयर यूनिट सर्कल विल एक्चुअली हेल्प यू. लेट्स से माइनस पाई बाय 4 एंगल यहाँ पर है और पाई बाय 4 एंगल यहाँ पर है. ठीक है. ऑफ कोर्स द फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन assume that this is the figure. या तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले रीजन में तो हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और इस वाले रीजन में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है. ठीक है. क्यों? साइन तो y कोऑर्डिनेट होता है इन दोनों रीजन्स में. ओके. तो वी हैव दिस थिंग. तो इससे हमारे पास दो रीजन्स में अगर मैं स्प्लिट करूं कि अगर यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 से 0 के बीच में है या 0 से पाई बाय 4 के बीच में हो, तो यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हमारे पास साइन नेगेटिव होता है. पर अगर हम पिछले उस पे जाएं, सवाल में जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या है? पॉजिटिव. तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा को भी क्या होना पड़ेगा? तो हमारे पास जो अल्फा माइनस बीटा है वो कहाँ से आएगा? 0 से पाई बाय 4 में आएगा. ठीक है. और हो सकता है जेई में आपको ऑप्शन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 भी दे, जो कि मतलब प्रिसाइज नहीं है. हालांकि वो भी सही है, बट वो प्रिसाइज नहीं होगा. ठीक है. तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम. And yes, now we can discuss how we can solve that problem. So we haven't solved the problem yet. We were discussing what are the intervals of alpha minus beta and alpha plus beta as of now. Okay, so this gives us a fair and clear idea that our terms are actually going to be positive, and hence my 2 alpha is actually going to be positive. ये देख सकते हो अल्फा आपके पास 0 to pi by 4 है, तो 2 अल्फा कहाँ हो जाएगा? 0 to pi by 2 हो जाएगा. दिस इज अनदर थिंग. सो मतलब हमारे पास आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए. अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, सो योर आंसर इज एक्चुअली इनकरेक्ट. ठीक है. so now we can move to the problem. Yeah, so we can move to the problem. So the problem states that we have to find the value of tan 2 alpha, and tan 2 alpha is actually equal to tan of alpha plus beta plus alpha minus beta. Now why did I do this? Because I know cos of alpha plus beta, right? And I know the sine of alpha minus beta. So I know these two values and I can actually manipulate it. So this value is given to me 4 by 5, and this value is given to me, what is the problem, 5 by 13. Yeah. Okay, so we can actually evaluate now. Okay, हमें पता है कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो इनमें टेंजेंट भी tan of alpha plus beta भी पॉजिटिव ही रहने वाला है. And since my tan of alpha plus beta is actually positive, तो हम cos of alpha plus beta से tan of alpha plus beta कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा. अगर नहीं पता है तो you must revise basic 10th class mathematics, nothing else. तो देख लीजिए यहाँ पर ये 5 4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फॉर बिगिनर्स. ओके, आप याद रखें, वैसे 3 4 5 का ट्राइंगल होता है. दिस इज अ वेरी फेमस ट्राइंगल ट्रिपलेट दैट यू विल कम ऑफन अक्रॉस. अगर आप फिजिक्स में देखें तो एच सी वर्मा बुक में ये इसके भर भर के प्रॉब्लम्स होते हैं. इनफैक्ट आज तक मतलब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई में मेरे काम आता है. अच्छा, ये 5 12 13 का भी एक ट्रिपलेट होता है. तो दिस विल बी 12 दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. ठीक है, यू कैन सॉल्व. तो यहाँ से हम tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं 3 by 4 सॉरी. एंड यहाँ पर tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं कितना? 12 by 5. तो हमने 3 by 4 निकाल दिया और हमने 12 by 5 निकाला. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, ये 5 होगा. सो दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 13 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये 12 होगा. तो दिस इज 5 by 12. एक्चुअली वही ना, मैं सोचूं कि ये वैल्यू बढ़ गई इससे, ऐसा कैसे हो सकता है.
because alpha plus beta has to be greater than alpha minus beta because the angles are positive. So anyways, we have alpha plus beta and alpha minus beta. So now we can actually find the value. So tan of alpha plus beta, tan of 2 alpha can be written as tan of alpha plus beta plus tan of alpha minus beta upon 1 minus tan of alpha plus beta times tan of alpha minus beta. Okay, so we have this thing and we can actually find its value. So tan of alpha plus beta we have calculated, this is equal to 3 by 4, right? And this is equal to 5 by 12 upon 1 minus 3 by 4 times 5 by 12. So we can calculate this. So this is 14 by 12 upon 1 minus 5 by 12, 5 by 16. So this is 11 by 16. Okay, so this is I think 4 4s are 16, 4 3s are 12, and 14 4s are 56 by 33. So this was the answer to this problem. ठीक है, आई थिंक वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रॉब्लम एंड आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी. दिस वाज क्वाइट इजी, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, येट इट वाज अ बिट ट्रिकी बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा एंगल्स में वेरिएशन दे दे तो द थिंग्स विल एक्चुअली डिफर एंड यू कैन दिस कैन लीड टू मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, बट दिस गेव अस अ सिंगल आंसर, so that is a good sign. So anyways, we have this problem done and we can move to another problem. Yeah, so we can do another problem and perhaps I would like you all to try the problem first. So this is another problem. So we have been given x plus y का वैल्यू हमारे पास pi by 4 दिया गया है और tangent of x plus 2y का वैल्यू दिया गया है 3. ठीक है, find tan x times tan y. और आपकी अप्रोच बहुत सिंपल होनी चाहिए, आपको tan x और tan y कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा. ठीक है, तो यू कैन प्रोसीड. मीनवाइल मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बिकॉज बिगिनर्स के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना जरूरी है ताकि आप लोगों को याद होने लग जाए. तो सिंपल है, अगर हम x प्लस माइनस वाई की बात करें तो वो साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई है और हमारे पास न्यूमरेटर में तो या so we have this and we can actually write this as tan of x plus minus y है तो ये आ जाएगा हमारे पास tan of x plus minus tan of y over 1 minus plus tan x tan y. Simple. So what is the value of tan x times tan y? Okay, so what I can do is I can actually write this expression. First of all, x plus y हमारे पास pi by 4 है, so this x plus 2y will be tan of pi by 4, or I must write it with a different color, tan of pi by 4 plus y. ठीक है, ये tan of pi by 4 plus y आ जाएगा, ये समझ आ रहा होगा, और इसका वैल्यू है 3. ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सिंपली इवेल्युएट कर सकते हैं 1 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan y, और इसका वैल्यू आ रहा है 3. तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 प्लस tan y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan y. तो इससे हमारे पास tan y का वैल्यू आ जाएगा 1/2. अच्छा, हमें क्या पता है कि x प्लस वाई है पाई बाय 4. ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू है पाई बाय 4 और tan ऑफ y का वैल्यू है 1/2. तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan x इंटू tan y निकालना है. तो हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड टेंजेंट ले लेते हैं. अच्छा, टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है 1, 45 डिग्री 1, और tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. ओके, और tan x tan y वैसे हमें निकालना है, बट बिफोर दैट आई थिंक वी कैन कैलकुलेट tan x फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो tan x प्लस 1/2 that is tan y is equal to 1 minus 1/2 tan x. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3/2 tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 और tan x का वैल्यू आ जाएगा 1/3. तो tan x मिल गया, tan y मिल गया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा tan x टाइम्स tan y, दिस इज इक्वल टू 1.
Okay, this is the answer. So anybody who wishes to note this can note. Meanwhile, uh, you can even think how these things happen, because I wish to give you time on these things, because these things are actually important. एंड आप लोगों के पास 11th में है जो लोग, खासकर उनके पास टाइम काफ़ी होता है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड आई डोंट विश टू बी फास्ट, बिकॉज आई थिंक कि मैं थोड़ा सा फास्ट चला जाता हूँ कभी कभी फ्लो में. बट यस, आई ट्राई टू बी एज आई विल ट्राई टू बी एज स्लो एज पॉसिबल, सो दैट द थिंग्स आर मच क्लियर. ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. यू कैन जस्ट रेफर टू द प्रूफ वंस. I'll share the slides as well. Okay, so let's move to the next thing. Yeah, okay, so what is our next problem? So we are discussing problems only right now, so that uh, we are able to revise this compound angle. So we have another problem. This is third problem. Alpha plus beta is given to be 90 degree, and beta plus gamma is equal to alpha. Okay, we have also been given that tan alpha times tan beta is equal to 1. Okay, and now I have to establish a relationship between tan alpha, tan beta, and tan gamma. Okay, so basically you have to find the relation between the three entries. Okay, so this is a very, very, very easy problem. Okay, and then yeah, we can again go for some problems. I have one or two problems as well, so we'll solve them and then we'll wind up. I'm not going to discuss much of new concepts now. We are going to solve problems only, so that मतलब आप लोग you are able to grasp these basics. I wish you to grasp these basics and practice upon them, and rigorously practice upon them. Great. So anybody can establish a relationship between tan alpha, tan beta, and tan gamma. So this is actually clear that alpha is equal to 90 degree minus beta. So anyways, okay, so what does this give to me? Also, I know that beta plus gamma is equal to alpha, which is equal to 90 degree minus beta. Great. So 2 beta plus gamma is also equal to 90 degree. And this 90 degree is actually equal to alpha plus beta. Great. So have I actually established a relation? And yes, I have. So this is alpha plus beta, and 2 beta plus gamma. This is actually 90 degree. Yes, so my beta plus gamma. Oh, so I actually arrived at that expression only. So I'm extremely sorry for that. Just misled myself. Anyways, so we have this expression, and we can simply apply tangent, or I can just transpose this. So I can gamma is equal to alpha minus beta. Why? Because I have tan alpha and tan beta. Okay, so now I have to simply take tangent both sides. So tan of gamma, because I have to establish a relationship between alpha, beta, and gamma, and I have a relationship between tan alpha and tan beta, that tan alpha times tan beta is equal to 1. And also actually that is actually true, because tan beta is equal to cot alpha, so tan beta times cot alpha is 1. So if had it not been given, this is actually assumed to be true. This is a useless information, sorry, because we can actually find this information. Okay, so tan gamma क्या हो जाएगा? Tan of alpha minus tan of beta upon 1 plus tan alpha tan beta. So this was a one liner. ठीक है, बहुत easy. तो tan alpha tan beta 1 है, तो tan alpha tan beta plus 1 आ जाएगा 2. So this will reduce to 2 tan gamma is equal to tan of alpha plus tan of beta. So this is our right. So this is our answer. And yes, we can move to the next question. And yeah,
we can move to the next problem. But before that, if anybody wishes to recall, you can recall the thing. Great. So I'm moving to the next problem. So this is fourth question, and the question is sine of A is given to be 3 by 5 and A in second quadrant. Okay, and cos of B is given to be minus 5 by 13 and B is in third quadrant. You have to find value of sine of A plus B. Find this value. You have a 1 minute because this question must not take more than a minute to solve. A very easy problem again. Sine A plus B. All you need to do is to understand how this thing, where is the angle. Try to draw it on a unit circle. You'll actually be able to find some of the areas. Okay, you don't need to draw accurate angle or something. You need to just get an idea कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल हो तो उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं और उस हिसाब से कौन सा साइन किस कोऑर्डिनेट का साइन मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा. अगर आप वो विजुलाइज कर सकते हैं देन द थिंग्स आर एक्चुअली वेरी सिंपल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली राइट इट एज sin a cos b plus cos a sin b. Now you have half of these. Okay, you have sin A and you have cos B. So you have the first term. You have the first term ready, but you need the second term as well. So from where can you establish the second term? You can establish it from this relation. So where is A? A is actually given in the first quadrant. Sorry, second quadrant. So second quadrant में let me draw A is somewhere here. तो इसमें क्या है हमारे पास? Y पॉजिटिव है यानी कि साइन हमारे पास पॉजिटिव है और x नेगेटिव है यानी कि cos नेगेटिव है. ठीक है, so cos will be negative and I can establish a relation from this thing that sin square a plus cos square a has to be equal to 1. This is the identity that I can use, and cos square a will be equal to 1 minus sin square a. What is the value of sin square a? So this is 1 minus 9 by 25. 9 by 25. So cos square a will be 16 by 25 or cos a is actually equal to plus minus 4 by 5. Okay, so this is actually after solving the equation. We'll discuss this more when we discuss a bit about modulus function, but yes, we have given now I know that cos is my negative, so my this cos a, value of this cos a, so just a minute, the value of this expression is actually going to be minus 4 by 5. And what about sin b? So for third quadrant the angle has to be here, and here both of the coordinates are negative, so this sin b has to be negative. And since this cos b is minus 5 by 13, you can again apply sin square a plus sin square b plus cos square b equal to 1, and you will find the value of sin b as minus 12 by 13. Okay, so this will be minus 12 by 13, and rest I think you can solve because you have sin a, so this is 3 by 5 and this is minus 5 by 13, and you're adding these two. So I would like you to solve. Okay, so just a minute, let me simplify it over here only so that the things are pretty clear. So this is 48 by 65 minus 15 by 65. Okay, so I must not cut. Okay, so 48 by 65 minus 15 by 65. Actually I don't have the answer written, so I would need to check the answer as well, but I guess since the procedure is correct, so the answer has to be correct. Okay, so this is done, and more or less we are done with this compound angle, but yes, we have to complete. So this is 33 by 64, right? Okay, so this is another thing. Okay, so we have another thing to prove. So proof, this is quite interesting. Prove sine of x plus y upon sine of x minus y is equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y. And yes,
that result might actually make you quite comfortable with this, and the result that we derived earlier. So you can prove it. So I leave this as an exercise, so you can try it out yourself. Okay, so I'm not going to discuss this problem. Instead, I would love to discuss another problem. Yeah, so we can discuss this problem, or instead we must discuss another problem, and then I think we must wind it up. Will not take too long because I wish you to understand rather than uh, start rote learning and all. So you have to simplify this expression. So simplify sine of alpha plus beta times sine of alpha minus beta. Okay, so simplify this expression in terms of sine alpha and sine beta. Okay, this is actually important. This result you might remember because this result can actually be handy. But if you don't remember, then there is actually no issue. It doesn't really matter too much. So I'll try solving this problem, and then and then we can call it a day. So anyways, we have this problem sine of alpha plus beta times sine of alpha minus beta. So this is again a simple problem because I know that sine of alpha plus beta is equal to sine alpha cos beta plus cos alpha sin beta, and times sine alpha cos beta minus cos alpha sin beta. We have to be extremely careful while writing the signs because uh, ISIGNS, those signs, because actually that can create a confusion. So you have to be extremely careful. ठीक है, उसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो सकता है. तो this is a plus b a minus b, so this is a square minus b square, and now we can simply write it in this format. So we have sine square alpha and cos square beta can be so I'm just breaking the two because I know that ab square can be written as a square b square. So because of this basic maths, I can write it as this way. ओके, सो इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया साइन अल्फा साइन बीटा के बीच में. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा plus sine square alpha sine square beta. So these two will get cancelled and this expression ultimately reduces to sine square alpha minus sine square beta. Great. So I guess the things are pretty clear and you can remember this result, although we are going to repeat this result in the next class as well, and we'll continue working on this entire trigonometry scenario for some more lectures, subsequent lectures. But till then I would like you कि आप लोग भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को. बाकी मेहनत करो भाई और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप ऐसे मतलब एक शीट बना लो, उस पर फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, एंड ट्राई टू रिवाइज इट टाइम टू टाइम. ऑटोमेटिकली फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएंगे. जब आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा. नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रोट लर्निंग बिकॉज you know from where the formula actually comes, and by the time you know that, so the rote learning is simple. This is just a recap, this is a revision checklist, and instead yeah, you can also watch the revision checklist for those who are in 12th and don't wish to attend these long lectures, tedious lectures. You can definitely go for revision checklist. So you'll find the links in the description. Do make sure to hit the like button, share and subscribe with the friends. Sorry, subscribe the channel and share it with your friends and press the bell icon for the latest updates. Thank you everyone for watching the video. Take care, stay safe, stay happy. Goodbye. Jai Hind. Bye.